Good evening, friends. Welcome to my channel. Today we'll be going through the recent amendments of GST filing. So, in GST, sequential filing of GSTR1 and filing of GSTR1 before GSTR3B on GST portal. The central government has amended Section 37 and 39 of CGST 2017 by Notification number 18, 2022, 28 September 2022 with effect from 1st October 2022. According to this section, a taxpayer shall not be allowed to file GSTR1 if previous GSTR1 is not filed, and as per Section 3910, a taxpayer shall not be allowed to file GSTR3B if GSTR1 for the same tax period is not filed. And second, GST Section 37(4) and 3910 of CGST Act 2017 are here. It says, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under subsection 1 for a tax period if the detail of outward supply of any previous tax period has not been furnished by him. जैसे पहले का अगर आपने फाइल नहीं किया हो प्रीवियस मंथ का, सो करंट मंथ का आप फाइल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए फर्स्ट आप प्रीवियस मंथ का फाइल करें आउटवर्ड सप्लाईज एंड देन यू कैन गो फॉर द करंट मंथ. Section 3910, a registered person shall not be allowed to furnish a return for tax period if the return for any previous tax periods or details of outward supply under subsection 1 of section 37 for the said tax period has not been furnished by him. That is, अगर आपने वही जो अगर प्रीवियस मंथ का आपने फाइल नहीं किया है रिटर्न और डिटेल्स आपने फाइल नहीं किया उसमें, तो करंट मंथ का आप फाइल नहीं कर पाओगे. तो इसलिए आप फर्स्ट प्रीवियस मंथ का डिटेल्स फाइल करें एंड उसके पश्चात आप करंट मंथ का फाइल कर सकते हो. Third, GST. These changes are being implemented prospectively and will be operational on GST portal from 1st November 2022. Accordingly, from October 2022 tax period onwards, the filing of previous period GSTR1 will be mandatory before filing the current period GSTR1. October 2022 tax period से filing of previous period GSTR1 will be mandatory before filing current period of GSTR1. जैसे अगर अक्टूबर 2022 पीरियड का GSTR1 आपने फाइल नहीं किया तो आप GSTR1 नवंबर का फाइल नहीं कर पाओगे. Further, from October 2022 tax period onwards, filing of GSTR1 will also be mandatory before filing of GSTR3B. तो 3B के पहले भी आपको GSTR1 फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा. जैसे अगर टैक्स पीरियड अक्टूबर के लिए GSTR3B आप फाइल नहीं कर पाओगे अगर आप GSTR1 पहले फाइल नहीं किया हो तो. थैंक यू.